Hello everyone, welcome back to Throttle Sound. So this is our Interceptor, and I was thinking to do some change in a sense इसके look में थोड़ा सा. I know so इसका जो light shield है that I have order और वो बहुत जल्दी आने वाली है, but उससे पहले I was quite excited to make it single seater. मेरे पास ऑप्शन बहुत थे. ऑप्शन इन सेंस एक सीट आती है जो कि एग्जैक्ट जीटी की आती है, दैट इज़ टिल हियर, एंड आई डोंट वांट दैट, बट मुझे ओल्ड वाली जो फील थी वो चाहिए थी. एंड फॉर दैट सो आई हैव वन ऑर्डर काउल जिसकी सीट की जो स्पेसिफिकली जीटी की सीट के लिए ही आता है. सो इसकी सीट अगर दिख पा रहे हैं तो पीछे से काउल के लिए ही बनी होती है, और ऊपर से जो सुपर प्रीमियम लेदर है दैट इज़ देयर, और ये बहुत प्यारी लगेगी. सो लेट्स जस्ट क्विकली अनबॉक्स द काउल. ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर काउल एंड पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, और डायरेक्टली इट्स कमिंग फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. एंड इफ़ यू सी द प्राइस, आई विल क्विकली शो यू द प्राइस. कहाँ गया, ये रहा, 3050. सो देर इज़ नो डिस्काउंट ऑन दिस, बट चलो अब जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं एंड लेट्स जस्ट सी हाउ दिस काउल लुक लाइक. Alright, so this is our brand new cowl and the packaging is really great. और इसको थोड़ा सा इस तरीके से that's amazing. Okay, so this is look really beautiful. This looks really beautiful. अभी अगर मैं अपने हाथ लगा रहा हूँ तो इस पर निशान गिर रहे हैं इन सेंस एकदम से ब्रांड न्यू है, और यू कैन सी द शाइन. एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस थिंग, जो कि सीट के पीछे फोल्ड अपन यहाँ पे इसको आराम से कर सकते हैं. सो दिस इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. Okay guys, so this is what I got in 3,550 rupees, and I got this cowl and I got these two nuts as well as these two premium Royal Enfield badging, and that I need to set here. उसके लिए मेरे को I believe सीट निकालनी पड़ेगी, and I need to put this. So let's just do it. To do is I need to open it, and I need to open the seat. Okay, as well as I guess I need those tools, so I'll keep it out. Okay, so first of all I need to put this seat here, and I need to lock it. So I believe very gently I need to do this process. So here from this side I'll just make the picture. ओके, सो फार आई हैवेंट यूज़ एनी टूल टू फिक्स इट, बट मैंने अपने हाथ से ही इसको थोड़ा टाइट कर दिया है. वाई? बिकॉज अननेसेसरी इसके ऊपर निशान आ जाएंगे. ऑन अनदर हैंड ऑल्सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट टाइट लाइक दैट ओनली, एंड आई बिलीव दिस इज़ गुड नाउ. डेफिनेटली ये अभी निकलने वाला नहीं है, और सीट बेसिकली प्रिपेयर कर ली है. अभी इसको वापस लगाएंगे. थोड़ी सी डर्टी है, यू कैन सी हियर, एंड विल क्लीन इट एंड देन विल पुट इट बैक. दिस विल टच दिस this handle. So basically what we need to do, we need to put first here, and then we'll slightly move it back, and then
we can push it like this. Oh man, oh man. So this is lock. So okay guys, this lovely machine is looking really beautiful. As previously we saw, there was no cowl and we just fitted the cowl. Now I believe we have a really different look of our Interceptor. This is looking really premium, and I would say, you know, ah, oh man, इसका जो look change हो रहा है ना, I mean that is something I don't know what to say, but it's looking really beautiful. Now I believe you guys can have a look. Okay, so this upgrade was the one that I just wanted to have from very long time, and there is one more upgrade that I'll do. अभी तो मैं इसको enjoy करने वाला हूँ. I'm gonna take this on a ride, on a city ride, and then let's see. Okay guys, so there is a suggestion from one of my brother, that is that it's better to remove this carrier so that it will enhance the look of our bike. So let's just try that. Let's just have a try. Okay, so this side is gone and this side is also okay, so easily. So finally we have removed it. Now I need to screw it again quickly. So after removing the carrier, it's looking more aggressive, more beautiful. Just have a look. This bike is quite lovely and beautiful. Wow. So let's have a walk around. Let's see.